A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to start a new chapter in 9th class mathematics. This is chapter number 5, lecture number 1, part 1, and the name of the chapter is Lines and Angles. Lines and Angles is one of the chapters in 9th class mathematics, chapter number 5. And today we are going to have an introduction about this chapter, Lines and Angles. This Lines and Angles chapter, it is actually one of the chapters of geometry. Lines and angles is one of the chapters in geometry. Now we will have a look about this geometry first, then we come directly to our chapter, Lines and Angles. As it is part of geometry, so we will have a look at this term geometry first. This term geometry, it has been derived from two Greek words. Two Greek words, geo and metron. The term geometry has been derived from two Greek words. एक Greek word से निकला है. Greek word geo, and another Greek word is metron. Okay, the term geometry has been derived from two Greek words. One is geo and another is metron. Now what do we mean by geo? Geo means earth. Geo means earth, and metron means measurement. Our chapter, Lines and Angles, it is one of the chapters in geometry, and geometry is a term which has been derived from two Greek words. One is geo, which means earth, and another Greek word is there, metron, which means measurement. So geometry means measurement of earth. Geometry means measurement of earth. Measurement का मतलब हुआ नापना, यानी जमीन नापना. हम इसका माने ऐसे ही निकालेंगे ज्योमेट्री का, जमीन नापना. जमीन क्या नापनी है हमें? एक्चुअली में जो अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स है. जैसे कि हम कहेंगे इसमें है माउंटेन्स. ठीक, तो अगर हम माउंटेन्स की मेजरमेंट करते हैं, दैट विल बी पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. ये तो हो गया एक फीचर, माउंटेन्स. देखिए, माउंटेन्स के बाद हम उठाएंगे सीज, जो हमारे समंदर है इस ज़मीन पे. अगर हम उनकी मेजरमेंट करेंगे, that will also form a part of geometry.
देखिए हमारी ज़मीन में और क्या आता है, हमारी ज़मीन पे और क्या आता है, हमारी अर्थ पे क्या और आता है? माउंटेन्स, सीज, देखिए डेजर्ट्स, रेगिस्तान आते हैं। तो इनको अगर हम मेजर करेंगे तो ये भी ज्योमेट्री में आएगा। और कोई फीचर है? यस, डेफिनेटली देयर आर रिवर्स। इनकी मेजरमेंट करेंगे हम, रिवर्स की मेजरमेंट करेंगे तो ये भी ज्योमेट्री में आएगा। और कौन से फीचर्स है? देखिए फॉरेस्ट्स है, हमारे जंगल है, उनको अगर हम मेजर करेंगे तो वो भी ज्योमेट्री में आएगा। सो द टर्म ज्योमेट्री, it has been derived from Greek word geo and metron. Geo means earth, metron means measurement. So we can say that geometry means measurement of earth. तो अर्थ में हम क्या मेजर करेंगे? ठीक, ज्योमेट्री में हम अर्थ को मेजर करते हैं, मगर अर्थ ज़मीन में हम क्या मेजर करेंगे? ज़मीन पे जो फीचर्स है, जैसे माउंटेन्स है, सीज, डेजर्ट्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स, इनको अगर हम मेजर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज जियोमेट्री। अब अगर हम मैथमेटिक्स में देखेंगे, अब मैथमेटिक्स में हम थोड़ा इसको डिफाइन करेंगे ज्योमेट्री को। मैथ्स में देखेंगे ज्योमेट्री किसको कहेंगे। जियोमेट्री मीन्स स्टडी, यानी पढ़ना, जानना। ठीक, ज्योमेट्री मीन्स स्टडी ऑफ दैट ब्रांच मतलब हिस्सा। ज्योमेट्री किसका हिस्सा है? मैथमेटिक्स का हिस्सा है। ज्योमेट्री मीन्स स्टडी ऑफ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स which deals with shapes, and properties of two-dimensional and three-dimensional figures. ओके, तो ज्योमेट्री हम किसको कहेंगे मैथमेटिक्स में? ज्योमेट्री मीन्स स्टडी ऑफ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के उस ब्रांच के मुतालिक जानना, विच डील्स, जिनका काम है, विद शेप्स यानी शक्ल, एंड प्रॉपर्टीज यानी खासियत, ऑफ टू डायमेंशनल यानी शक्ल और खासियत, किनकी? टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। जो भी हमारे टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं, उनकी शेप और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जो हम हासिल करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, या उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ज्योमेट्री। मेरे साथ आप दोहराएंगे। ज्योमेट्री मीन्स study of that branch of mathematics which deals with shapes and properties of two-dimensional and three-dimensional figures. Once again, I will repeat. Geometry means study of that branch of mathematics which deals with shapes and properties of two-dimensional and three-dimensional figures.
यानी शेप्स और प्रॉपर्टीज किनकी, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में जो भी हम इल्म हासिल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज जियोमेट्री। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन होते हैं जिनके बारे में हमें, जिनकी शेप्स और जिनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। Let us see what are these 2-dimensional and 3-dimensional figures. Okay, we will see now 2-dimensional and 3-dimensional figures. हम किन को कहते हैं? चलिए जी पहले 2-dimensional figures को देखेंगे। 2-dimensional figures, इनकी शेप जो 2-dimensional फिगर्स में बनाऊंगा, उनकी शेप और प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसी को ज्योमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा 2-dimensional फिगर अगर हम देखेंगे, चलिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, दिस फिगर, आई थिंक दिस फिगर इज rectangle. Okay, this is rectangle, and this one looks to be a square. Okay, this one looks to be a circle. Okay, this one is circle, and this figure, what is this figure? This figure is a triangle. Okay, triangle. So these are some important figures we often come across. These figures, these are 2-dimensional figures. Rectangle, square, circle, triangle. These are 2-dimensional figures. Now, why are these 2-dimensional figures? See, rectangle, it has a length. Say its length is 5 centimeter. It has a breadth as well. Say its breadth is 3 centimeter. So this one is length and this one is breadth. Means it has 2 dimensions, length and breadth. Similar is the case with square. It has length as well as breadth. Circle, see, it has this line segment is actually a diameter. Now another diameter we will draw. It will be perpendicular bisector. You already know this line segment has a perpendicular bisector here. This line segment is diameter. This line segment is also a diameter. This will be called as length and this will be called as breadth. So this is also 2-dimensional figure. Now triangle. See, this one is, if we go on from left to right, it has some length. From left to right, it has some length. It has covered some distance. Okay, now if we move in this direction, it has this dimension as second dimension as well. This will be its first dimension, moving towards the right, and moving towards up means it has another dimension. So it is also a 2-dimensional figure. Triangle, rectangle, square, circle, triangle, rhombus, trapezium, parallelogram, quadrilateral, all these are 2-dimensional figures. Not only these, in fact, suppose from this point to this point, what will this figure be called? From this point to this point, it's a line segment, isn't it? Rectangle is made up of line segments. Suppose I will take this line segment, 5 centimeter line segment. This is 5 centimeter line segment.
Is this a two-dimensional figure? Is this a two-dimensional figure? It has a length of 5 centimeter. What is its breadth? What is the breadth of this line segment? No, we cannot measure the breadth of this line segment. Can we say that it has no breadth? Okay, we can say that it has no breadth. Or some may say, yes sir, it has some thickness, it has some breadth. Okay, some may say, no, it doesn't have any breadth. Some may say, yes, it has a little bit of breadth as well. Length is there is no doubt, but some may say that it has a small breadth, some may say it doesn't have any breadth. So there's a confusion whether it is two-dimensional or not. But because this line segment is a part of this rectangle, line segment is a part of a rectangle, line segment is a part of square, line segment is a part of triangle, so this figure also comes in geometry. We know that in geometry two-dimensional figures are included, that is rectangle, square, circle, triangle, rhombus, trapezium, quadrilateral. But since this line segment is also a part of this two-dimensional figure, therefore line segment also comes in geometry. It also forms, line segment is also a part of geometry. Means if we study about this line segment, it will also be a part of geometry. Similar is the case with this figure is a line. Okay, is this a two-dimensional figure? No, it may not be a two-dimensional figure, but it also it has a connection, it has a link with this line segment. Line segment is a part of line. Line segment is a part of this rectangle. Line segment is a part of rectangle, so it also comes in geometry. Line segment has a link with the line because line segment is a part of line. So this line is also a part of geometry. Although line segment is not a two-dimensional, but because it is a part of this two-dimensional figure, so this will also come in the geometry. Similarly, line is not a two-dimensional figure, but it has a link with line segment. It has a link with line segment, and line segment is also a part of geometry. So therefore we can say line is also a part of geometry. Means geometry में line का concept भी आता है, line segment का भी concept आता है, rectangle भी, square भी, circle भी, triangle भी. ठीक, इसी तरीके से हमारी एक और फिगर है जिसको हम रे कहेंगे. ठीक, रे कहेंगे. दिस इज रे, और रे भी लाइन का हिस्सा है. रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, और लाइन सेगमेंट पार्ट है टू डायमेंशनल फिगर का. तो ये सब आपस में कनेक्टेड है ना, ये सब आपस में कनेक्टेड है. इसका ताल्लुक इसके साथ है, लाइन सेगमेंट के साथ है, लाइन सेगमेंट का ताल्लुक लाइन के साथ है, रे का ताल्लुक भी लाइन के साथ है. सो ऑल दीज फिगर्स आर पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. रे is also a part of geometry. तो ज्योमेट्री में हम सिर्फ टू डायमेंशनल शेप्स ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनसे जो कनेक्टेड है, जैसे लाइन सेगमेंट है, लाइन है, रे है, दैट ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. तो ये तो हो गई टू डायमेंशनल फिगर्स की शेप्स. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. देखिए इसमें प्रॉपर्टी जो है इसकी, जो ये तो शेप्स थी, दीज वर द शेप्स.
shapes of these two-dimensional figures or the figures that are linked to these two-dimensional figures. अब हम थोड़ी properties के बारे में पढ़ेंगे. अगर हम इन two-dimensional figures की properties पढ़ेंगे तो वो भी ताल्लुक़ रखता है ज्योमेट्री के साथ. तो प्रॉपर्टी अगर हम रेक्टेंगल की देखेंगे, रेक्टेंगल की, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. हम अक्सर कहते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की. दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है. एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री. ईच एंगल इज 90 डिग्री. तो ये तो सब इसकी प्रॉपर्टीज है, खासियत है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है. तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज है किसकी है, रेक्टेंगल की. और रेक्टेंगल खुद क्या है, ये टू डायमेंशनल है. ये टू डायमेंशनल फिगर है ना. टू डायमेंशनल फिगर रेक्टेंगल है. इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमने देखी. तो ये भी ताल्लुक रखता है ज्योमेट्री के साथ. तो ज्योमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं शेप्स और प्रॉपर्टीज किनकी, टू डायमेंशनल फिगर्स की. टू डायमेंशनल फिगर्स की. चलिए जी, रेक्टेंगल की शेप हमने देखी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी हमने जानने की कोशिश की. तो इसको हम ज्योमेट्री कहेंगे. द ब्रांच ज्योमेट्री मीन्स स्टडी ऑफ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with shapes. These are the shapes and properties of two-dimensional and three-dimensional figures. इसी तरीके से हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, वो भी ज्योमेट्री में आएगा. सर्कल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो भी ज्योमेट्री में आएगा. ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो भी ज्योमेट्री में आएगा. तो ये तो बात थी टू डायमेंशनल फिगर्स की. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थ्री डायमेंशनल फिगर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक, तो इतना काफ़ी है. शुक्रिया.